friends, welcome to a new episode of RNR Talks. And today we are going to enter the world of bakery, cakes, and yummy delights. So today I have Hafsa Sheikh, who also runs her cake business with the name of Hot Cakes, on my new podcast. Hi Hafsa, Hello, welcome to Raya. my show RNR Talks, to a new episode. So in my this episode, let's cover your journey of, I think you have been in this cake industry for 8 years now, That's right. and you're fully operating from house, and you are a home baker and slightly into cloud kitchen. We are going to understand more about your journey, understand more about cloud kitchen, how it operates, and also figure out uh, what are the challenges that you face. So this episode aims at giving inspiration to home bakers, or people who are ready or who are just on the brink of getting into the cloud kitchen business, or want to explore their passion but probably think that घर के छोटे kitchen से we cannot do this kind of business. So let's start our first segment, which is to know her journey. So Hafsa, I wanted to know, how did your journey in this baking world begin? What have been, how have you started off, and just tell us about your journey. So I was very young when I had a dream of running my own restaurant. I was probably in school. That's like probably a decade ago. But back then I knew that I want to enter the hospitality field. मुझे पता था कि मेरा सारा फोकस उसमें ही है. But again मैं तभी बहुत छोटी थी ये समझने के लिए कि मैं कौन से फील्ड में अच्छी हूँ या नहीं हूँ. आई थिंक इवेंचुअली टीएलसी जैसे प्लेटफॉर्म्स या यूट्यूब देख देख के मैंने फाइनली अपना फर्स्ट केक बनाया था जो बहुत ही ज़्यादा खराब बना था. तो अगेन मैं तभी भी श्योर नहीं थी कि इफ आई वांट टू डू दिस और इट्स गोना वर्क आउट. आई हैड नो आइडिया. बट देन इवेंचुअली विद टाइम स्लोली करते करते एंड चीज़ें समझते समझते मेरा फाइनली फर्स्ट केक ऑर्डर जब गया था एंड उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला था तब मुझे वो अश्योरिटी मिली थी कि नहीं, आई मीन आई थिंक आई कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड. एंड द फैक्ट कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इट्स एफर्टलेस फॉर मी. सो आई थिंक दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. So YouTube, you mentioned YouTube, you said your journey was 8 years back. या So how much, and have you taken any professional course, or have you done something, any professional master chef kind of course or something like that to excel in this नो, field? नथिंग लाइक दैट. सो मैंने चालू ही ये जर्नी यूट्यूब से किया था कि चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ-समझ के. एंड I think 8 years ago, YouTube was very different. Social media was not that much. So I think जो भी मैंने सीखा है वो या तो खुद के hacks और tricks से ही सीखा है over the years, or I think YouTube has been the teacher, no doubt. But I think yeah, I mean over the years, So YouTube has been. how did you how did you begin with? So did you begin with flavored cakes, or did you Hmm. just jump into, मुझे design cakes बनाने हैं, fondant cakes बनाने हैं? So that was, what was your like beginning like? सो पहली बात तो वो एस्पेक्ट ही समझना कि कस्टम केक्स या फॉन्डेंट केक्स बनाना. आई थिंक वो मास्टर करने से पहले इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू मास्टर बेसिक केक्स, विच इज़ वाई काफ़ी महीनों तक मेरा फोकस जो था वो सिर्फ था कि बेसिक केक्स भेजना. चॉकलेट केक हो गया, पाइनएप्पल केक हो गया. अगेन काफ़ी डिज़ाइनर केक्स नहीं, बट काफ़ी बेसिक डिज़ाइन के केक्स जो भी क्लाइंट चाहते थे वैसा. बट देन इवेंचुअली विद टाइम कस्टमाइज्ड केक्स एंड फॉन्डेंट केक्स जो थोड़ा बहुत है, वो मैंने इवेंचुअली करना चालू कर दिया. So फिर ये बेसिक के स्किल्स आपने डेवलप कैसे किए? जैसे आपको क्रिएटिविटी सीखना था, या फिर कुछ ऑब्वियसली उसमें टेक्निक्स काफ़ी होते हैं, एंड आई हैव आल्सो पर्सनली ऑर्डर्ड योर केक्स एंड टेस्टेड, so you give it a very professional touch. राइट. So then how did you get the knowledge of, how did you learn कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए इतना यूज होता है, या ये मेजरमेंट यूज होता है, और हाउ डिड यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ? सो हर केक आर्टिस्ट का या एवरी बेकरी हैज इट्स ओन मोटो एंड सबका अपना अपना तरीका होता है चीजें करने का, जो आई फील इवेंचुअली विद टाइम ही समझ में आता है. आप चालू ऐसा केक बनाते हो जो शायद लोग पैसा भी ना दे उसके लिए, बट आई थिंक इवेंचुअली
आप खुद ही चीज़ों को समझते हो कि अच्छा ठीक है, टू गेट दिस स्मूथ फिनिश, प्रोबब्ली दीज़ आर द हैक्स दैट यू कैन गो फॉर। अब ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सब्जेक्टिव है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस तुमको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, या कोई प्लेटफ़ॉर्म कोई तुमको सिखा नहीं सकता कि हर बेकर का जर्नी, हर आर्टिस्ट का जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक इवेंचुअली ओवर द इयर्स वो खुद से ही सीखता है कि प्रॉब्ली मिस्टेक से ही सीखता है कि अगर अच्छा ऐसे हो रहा है तो देन वैसा, अगर कभी-कभी केक स्टैक नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्स द रीज़न? सो वो समझना पड़ना, एंड बिकॉज़ मेरा कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं था इससे रिलेटेड, so which is why it took a lot of time compared to the person who has already done a course and knows what's going on. But for me, it was very different. I had to figure out things on my own. But I think eventually I did, and yeah, things started working out So after some time. how were your clients initially? Like, how did you get on to this thing? Orders कैसे आते थे आपके? सो आई थिंक हर बिजनेस का स्टार्ट फ्रेंड्स और फैमिली के हेल्प से ही होता है, एंड देन इवेंचुअली वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज तभी अगेन गूगल और सोशल मीडिया, जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी इंस्टाग्राम पे आप एक ऐड डाल दो तो लोगों को पता चल जाता है कि आप एक मैप पे हो एंड दिस इज वेयर यू आर एंड दिस इज व्हाट यू डू। बट तभी के टाइम पे आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इवेंचुअली फ्रेंड्स ने चालू किया, एंड देन तभी इंस्टाग्राम काफी नया नया आया था, तो रील्स करके ऑब्वियसली कुछ थे नहीं। Which year is this? This was 2016. I was Okay. around 17, 18 years old. Hmm. And again, तभी इतना कुछ था नहीं, तो आप नॉर्मल फ़ोटो पोस्ट करो और फ़ेसबुक पे डालो, एंड वही, और आप क्या ही कर सकते हो? कोई इतना व्हाट्सएप ग्रुप्स, मार्केटिंग एग्ज़ैक्टली, क्योंकि तभी उतना भी इतना नहीं था तभी, ग्रुप्स ये आई डोंट सब थिंक थे सो। ही नहीं, आई डोंट थिंक सो इट एक्जिस्टेड। अभी तो काफ़ी प्रोफेशनल मार्केटिंग ग्रुप्स ये सब बन गए हैं, जहाँ राइट। पे अपनी ऐड आप डेली बेसिस पे डाल सकते हो। बट तभी आई थिंक आई वाज़ टू नाइव टू इवन अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग का लाइक टर्म कैसा चलता है, या हम्म। हाउ टू बी ऑन द पेज, हाउ टू बी ऑन द मैप, बिकॉज़ अगेन मैं कोई रेलेवेंट बैकग्राउंड से नहीं आ रही हूँ, नाइदर मेरी फैमिली में किसी ने बिज़नेस किया है, कुलिनरी किया है। तो आई थिंक जो भी करना था, आई हैड टू फिगर इट आउट ऑन माय ओन, वैसा। तो इवेंचुअली फ्रेंड्स ने चालू किया, एंड देन दे पोस्टेड स्टफ ऑन इंस्टाग्राम, एंड ये बोल के स्टोरी पे कि अच्छा दिस पर्सन हैज स्टार्टेड, एंड तो इवेंचुअली वो होता गया, एंड जो हॉट केक्स तो काफी टाइम के बाद नाम चेंज हुआ, बट जो मेरा एक्चुअल बेकरी था, वो मेरा ड्रीम था टू स्टार्ट माय बेकरी एज नो मोर बोरिंग केक्स, बट लोगों के रिकमेंडेशन से इवेंचुअली वो नाम चेंज हुआ, इट वाज चीजें नो बेटर मोर हुई। बोरिंग इट केक्स। वाज नो मोर बोरिंग केक। व्हाई डिड यू कीप नो मोर बोरिंग केक्स? आई यू थिंक, फेल्ट कि या बाकी के लोग बोरिंग केक्स बनाते थे? नहीं, नथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक तभी के मार्केट में बहुत बेसिक केक्स मिलते थे। आई मीन नोबडी वाज इनटू कस्टमाइजेशन अ लॉट, एंड इवन इफ दे वर, आई थिंक इट वाज नॉट वेरी मच अप टू द मार्क, नॉट दैट आई वाज वेरी ग्रेट बैक देन, but I think I just loved the name. It was like very unique, not something like Taste Bites or something like that. Not that it's bad, but तभी के टाइम पे बहुत अलग था। But I think मुझे काफी negative feedbacks आए थे कि why do you have to start Demean your, someone else by yeah, saying something कि like your that. cake is boring and mine is Exactly. not. So I think वो eventually मुझे समझा, and then I बट changed my डोंट name यू to थिंक that. कि अभी ये पूरा जेंजी वाला Hmm. फियास्को, मतलब अभी जो चल रहा है उसमें तुम्हारा नो मोर बेकिंग केक्स अगर रखेंगे तो इट विल बी मच बेटर देन हॉट केक्स? आई मीन Any एज day. पर व्हाट आई एम सीइंग इन दिस जनरेशन, आई मीन दे गो बाय द नेम या एंड या या। या सब कुछ कूल चाहिए, ऐसा कुछ, हाँ, बट आई थिंक अभी के टाइम पे ऐसा है कि आई हॉट थिंक केक्स मैंने ज्यादा क्लासी काफ़ी, लगते हैं। हाँ, चेंजेस ला लिए हैं, एंड आई थिंक अभी प्रोफेशनली भी ऑन पेपर्स भी काफ़ी हॉट केक्स हो गया है। तो आई थिंक अभी अगर नाम चेंज कर दिया एट दिस एज, आई मीन जब इनिशियल पे था, यू कैन प्रोबब्ली डू इट व्हेन पीपल barely know you. राइट। Now I think everybody knows me by more by my brand name than Hafsa itselफ। तो आई थिंक अगर अभी नाम चेंज करना, I'll be some sort of confusion which is not required at this stage, I राइट। feel। सो इनिशियल डेज के बारे में वील टॉक मोर, सो आई जस्ट वांट टू नो what were your funny stories and what happened? So you were telling me about something. राइट। uh, सो एक बार ऐसे हुआ था कि वन ऑफ माय फ्रेंड, नॉट वेरी गुड फ्रेंड बैक देन, ऑफ कोर्स शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नाउ, बट तभी शी ऑर्डर्ड अ बैटमैन केक, एंड आई वाज वेरी न्यू टू दिस, लाइक probably फर्स्ट कस्टमाइज्ड केक और समथिंग, आई वाज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बोला था हाफ केजी करना, आई थिंक मैंने उनको 2 किलो का ही केक दे दिया था, बिकॉज मुझे तभी उतना आइडिया भी नहीं था, एंड उनको चाहिए था ब्लैक आइसिंग। अब ऐसा सीन हो गया था कि अगर मैं आज के टाइम पे वो करती तो प्रॉब्ली मैं चॉकलेट आइसिंग यूज़ कर सकती थी। बट तभी के टाइम पे मैंने व्हिप क्रीम से ब्लैक आइसिंग बनाया, जिसमें मैंने आई गेस पूरी फूड कलरिंग की बॉटल डाल दिया था। तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि जब उनको केक मिला, तो ऑब्वियसली टेस्ट एंड ऑल दैट वाज़ प्रीटी मच अप टू द मार्क। बट वो आइसिंग के चक्कर में जिस
मेरी एक फ्रेंड ने ब्रेसेस करवाया था, तो वो उसके पूरे मुँह पे ब्लैक ब्लैक लग गया था। तो शी हैड टू गो टू द डेंटिस्ट वैसा। And then her mother gave me a call कि listen beta your cake was nice and all that but She still said your cake was nice. yeah the taste and all that was nice but can you prepare a छोटू cake because ये तो ऐसा ऐसा हो गया। लोगों ने खाया ही नहीं है, इनफैक्ट खाना तो छोड़, वो मुझे आधा केक उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया था कि कि मतलब आप रख लो एंड यू गिव अस द मनी बैक। सो मेरे पैसा भी गया था, मेरा इन्वेस्टमेंट भी गया था, मेरा टाइम भी गया था, काफ़ी हद तक मेरा नाम भी खराब हुआ था। बट मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि शायद आई वुड नॉट वांट टू कंटिन्यू दिस एंड आई डिसाइडेड टू अनइंस्टॉल एवरीथिंग एंड एवरी प्रॉब्ली डिलीट एवरी पेज। बट देन इवेंचुअली बैड इंसिडेंट की वजह से यू कांट जस्ट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड देन फैमिली एंड फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि लिसन एक तो बैड नेगेटिव इंसिडेंट पब्लिसिटी हुई थी इस इंसिडेंट के बाद? हुई थी बट एक बहुत अच्छी बात ये है कि अभी वो फ्रेंड या व्हाटएवर क्लाइंट अभी वो काफी रेगुलर क्लाइंट है, तो अब वो उनको रेगुलर क्लाइंट हो अभी गए? रेगुलर क्लाइंट हो गया है, तो नाउ आई तो मीन आप डिस्काउंट देते हो फिर उनको? ट्राई करती हूँ बट लेट्स सी। बट नहीं वैसा है कि ठीक है वो मिस्टेक्स है, वो पास्ट है, यू लर्न फ्रॉम इट एंड नाउ people can see that when you're on map and you're that good, they will eventually want it and want to try it. So that's तो ठीक है, होता है। आई मीन इवन हमने भी कुछ होम बेकर्स से स्टार्टिंग में केक मंगाया था। आई थिंक वंस माय फादर इन लॉ मदर वाज देयर एंड आई जस्ट ऑर्डर्ड अ टिंज्ड रम केक। हाँ। तो वो टिंज रम केक नहीं था, उसके अंदर पूरा बॉटल ही शायद उसने उलट दिया था। बाप रे। तो खा तो लिया सबने, लेकिन देन इवेंचुअली एवरीवन स्टार्टेड फीलिंग डिजी एंड आई मीन आई नेवर टोल्ड एनीवन कि वो रम केक है, लाइक राइट। तो ऐसे काफी होता है होम हम्म बेकर्स के साथ, ऐसे काफी इंसिडेंसेस होते हैं। हम्म। मे बी हमने भी इतना उसका वो नहीं बनाया, इशू नहीं बनाया, वी लाफ्ड इट आउट। राइट। बट दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। आई मीन स्टिल आपके क्लाइंटल्स कैसे, मैं स्टिल आपके क्लाइंटल्स उन्हीं रेफरेंसेस के थ्रू होते हैं या फिर देन अभी ज्यादा मार्केटिंग होती है न्यू क्लाइंट्स के लिए? हम्म। सो व्हाट लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन डू यू फेस? So now in order to make sure that your client is coming back to you, it's important for you to be showcased all the time. आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि यू आर लिटरली एवरीवेयर। ट्राई बीइंग ऑन गूगल, ट्राई बीइंग ऑन इंस्टाग्राम, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड दैट्स हाउ इवेंचुअली वो कैच कर लेता है लोगों को। और जब आप नॉर्मली, मेरा फोटे ये है कि व्हाटएवर कस्टमाइज केक यू वांट आई एंड अप मेकिंग एग्जैक्टली सेम। तो जब लोगों ने देखने लगे कि ओके नहीं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस टू व्हाट शी स्टार्टेड एंड व्हाट शी इज नाउ एंड टेस्ट बेटर हो गया, लाइक डिजाइन बेटर हो गया, फिनिशिंग बेटर हो गया, तो इवेंचुअली पहली बार मंगाना थोड़ा रिस्की रहता है बट देन जैसे वो उनको पसंद आ जाता है तो दे नो कि मतलब टचवुड मेरा रिकॉर्ड भी वैसा रहा है कि वंस यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम मी द सेकंड टाइम यू नॉर्मली डू इट, दैट्स देयर। सो आई थिंक दैट्स द बेसिक थिंग, मतलब आप अपने आप को हर जगह अवेलेबल कर दो, मेक श्योर दैट पीपल आर सीइंग यू एंड आई थिंक दैट्स द कैच। द मोमेंट दे आर सीइंग यू दे विल इवेंचुअली ऑर्डर बिकॉज़ कुछ ना कुछ टेम्प्टिंग लगता है। अब डेज़र्ट ऐसा है कि मतलब यू डोंट हैव टू ईट एन एंटायर केक बट आजकल मार्केट में इतना ज़्यादा निकल गया है, बेंटो हो गया या मिनी हो गया, व्हाटएवर इट इज़, यू फील लाइक हैविंग इट, यू हैव अ बैड डे, यू जस्ट ऑर्डर इट। सो आई थिंक वो छोटे-छोटे चीज़ों से भी व्हेन यू ट्राई इट, you know that okay, she's good and maybe we can trust her with future orders. So Okay. that's how it is. So being a cake artist, I wanted to know what is the percentage of cakes that you have right now which come to you in terms of custom cakes and flavored cakes. Hmm. So is the ratio 20/80 or what do you think? How is it right now? I think as of now, it's mostly 75-25, where people want 25% want the customized cake because I think over the years, 8 years ago, लोग उतना customized cake या उतना occasions नहीं celebrate करते थे। I think ये काफी recent हो गया है जहाँ लोगों को हर छोटी चीज के लिए भी केक चाहिए। पहले तो I think birthdays और anniversary ही main event होता था जहाँ पे you need a cake and like celebration and all that. But I think अभी बहुत छोटी चीज से, for example कि जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट ऑर्डर्ड स्ट्रेट अप फॉर 12 मंथ, ठीक है, Okay. बिकॉज फर्स्ट मंथ का बर्थडे केक, सेकंड मंथ का बर्थडे केक, तो ये सब बहुत ज्यादा ही इलेबरेटेड हो गया है एंड पीपल आर ओके स्पेंडिंग दैट मच। सो नाउ आई वोंट से दैट ऑल ऑफ देम वांट अ कस्टमाइज्ड केक, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम comes with the demand of a customized cake only, that way.
So flavoring cakes are more favored in budget constraints. That's right. Because see, customized cake requires a lot of precision, time. There's a whole process that goes through it. अब सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि you have come up to us and अच्छा ठीक है हमारे पास कुछ पड़ा है हम दे देंगे ऐसा नहीं रहता है there's this design aspect कि आपको कौन सा चाहिए या कैसा चाहिए and then accordingly price ratio set होता है depending on the flavor and stuff like that but I think the basic one are of course हमें खाली एक chocolate cake चाहिए कैसा डिजाइन वो आप अपने हिसाब से देख लो तो I think it's just easier that way but I think customized cakes requires okay, we cannot do this, we cannot do that because I think वो color ratio समझना ये वो. So I think which is why customized cakes are comparatively much more on the higher end. That way. तो कस्टमाइज केक्स में अभी लाइक अलग अलग ट्रेंड्स है तो बीच में फोटो केक्स का ट्रेंड आया था Mhm. और बहुत सारे अलग अलग चीजें आई थी तो अभी करंटली व्हाट इज द ट्रेंड विच इज बीइंग एज अ केक आर्टिस्ट आप लोग प्रमोट कर रहे हो बहुत ज्यादा या फिर बहुत चलता है सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक केक ट्रेंड अभी इतना ज्यादा बदलने लग गया है बिकॉज पहले ऐसा होता था आई थिंक 3-4 साल पहले कि वो एक रोजेट वाला केक बड़ा चल रहा था एंड वो काफी टाइम तक चल रहा था बट अभी ट्रेंड्स ऐसे हो गए हैं कि काफी रिसेंटली फायर केक करके आया था ओके नाउ दे नॉट वो स्टॉपिंग ओनली केक के ऊपर दैट हाँ तो लाइट केक के करके ऊपर आप सिर्फ आग लगा दो एंड अंदर यू विल गेट अ डिजायर्ड मैसेज फोटो एनीथिंग दैट यू प्रेफर but I think now people have gone a little too much. It's good for us because they want that type of cakes. But I think ऐसा कोई set trend नहीं है because I think it's just आज कुछ और है तो कल कुछ और. They've come up with different news where there's this hidden message cake. So the motive to be very honest is काफी similar to surprise the person. But I think there's this innovative ways that are coming out and it's good like you are adding something different but again they cannot you cannot say कि अच्छा आज ये है तो ये चलता ही रहेगा it's just changing frequently that सो टेल मी आपके पूरी ये जो केक आर्टिस्ट वाली जर्नी है इसमें आपके व्हाट आर योर एडवांट लाइक व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू और व्हाट आर चैलेंजेस so I think दोनों चीजें हुई थी मतलब मुझे एक बार पहली बार किसी का दिस वाज नॉट द फर्स्ट वेडिंग केक बट दिस वाज द फर्स्ट 3 tier वेडिंग केक जो काफी रिसेंटली गया था और उसमें मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा लर्निंग्स मिले थे बिकॉज पहली बार 3 tier केक बनाना है उसको ट्रैवल करके लेके जाना है 1 hour में ठीक है लाइक 1 hour उसका ट्रैवलिंग टाइम है एंड वो कैसे करना है कैसे होगा तो उसका इंसिडेंट भी ये हुआ था कि उनको चाहिए था कुछ 12 बजे या ऐसा कुछ एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था तो मी एंड माई सिस्टर होल्ड दैट 3 tier केक एंड वी वॉकड ऑल द वे लाइक फॉर 30 minutes स्ट्रेट so वो एक लर्निंग था एंड देन बट इवेंचुअली यू वॉकड 30 वी मिनट वॉक वॉकड वी वॉक 30 minutes बिकॉज गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी एंड क्लाइंट कंटिन्यूसली कॉल करे जा रहा था ठीक है एंड नाउ वी गेट सो दैट व्हेन यू क्लाइंट डिड दिस जर्नी आपका केक हाउ डू यू कीप योर केक प्रोटेक्टेड आई मीन अगर आप कहीं पे इस तरीके से जा रहे राइट हो सो सी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था एज आई मेंशन कि 3 tier केक है तो आइडिया ही नहीं है कि बट आई मेड श्योर दैट वी आर वेरी केयरफुल वी आर वॉकिंग लाइक very baby steps we were taking while we were walking but we had to walk that much because we could not wait for the car to move because it was not moving to be very honest but eventually we delivered and it turned out beautiful luckily kuch bhi nahi hua and that client had ordered for herself as well the same cake because she liked it that much so I think वो थोड़ा बहुत learning और unlearning के process में this is how you eventually understand that okay this is probably the process but again कोई ऐसा एक systematic process नहीं होता है हर केक comes with different challenges and you have to deal with it that's it सो असेंबलिंग प्रोसेसेस कितने डिफिकल्ट होते हैं so I think tier cake समझना कि देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर गोइंग ऑन आप सीधा केक के ऊपर केक अगर रख दोगे तो वो टूट जाएगा वो नहीं बैलेंस कर पाएगा बिकॉज केक एक तो बहुत सॉफ्ट होता है दूसरा इट हैज लॉट ऑफ फिलिंग्स एंड ऑल दैट सो इट्स हैवी सो केक के अंदर कोई ऐसा बेस वेस नहीं होता है सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर लेयर पे स्ट्रॉ डाल रहे हो ठीक है एवरी लेयर दैट यू आर अटैचिंग यू हैव टू हैव लाइक अ बोर्ड every layer पे and there should be one rod that goes through both of the tiers 3 tiers 4 tiers whatever but this is how the structure works काफी basic चीज है
ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, मतलब आप कुछ भी अगर ब्रिक या कोई भी घर वर भी बना रहे हो तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जो आपका रूट है या जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग रहे, तो इवन इफ यू लाइक मूविंग बहुत ज्यादा, इट शुड नॉट अफेक्ट द केक, सो दैट्स द और टिप्स. कितना, हाउ मच टाइम डू यू टेक, लाइक कितना टाइम लगता है आपको इस टाइप के केक्स बनाने का, या फिर पूरे टाइप चीज को कंसेप्शलाइज करने के लिए? हम्म. जैसे टीएलसी पे जो वीडियोस आते थे उसमें हम देखते थे कि यू नो इट यूज टू टेक देम अ डे और टू टू राइट. तो नाउ हाउ मच टाइम डू यू टेक? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीएलसी के जो वीडियोस आते थे, दे यूज्ड टू प्रॉब्ली बुक द केक और द केक आर्टिस्ट प्रॉब्ली अ मंथ अगो. टेस्ट टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, एंड दे हैव लाइक अ 10 people team under them. Okay, when you're running your own business and you're not habitual कि मतलब कोई उतना अच्छा कर पाएगा जितना अच्छा मैं कर पाती हूँ, तो वो सेल्फ डाउट खाली खुद पे ही रहता है कि खुद को ही करना है. राइट। ठीक है. सो यू स्टार्ट अ डे बिफोर वेयर यू आर डन विद द बेकिंग, कि मतलब केक को इवेंचुअली थोड़ा टाइम मिल गया है ठंडा होने के लिए, आइसिंग रेडी हो गई है, एंड देन इवेंचुअली अ डे आफ्टर लाइक मॉर्निंग में अगर केक देना है तो यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज उसका ठंडा होना भी जरूरी है. राइट। वैसा. तो probably it roughly takes about 3 to 4 hours just by stacking it because उसमें रेफ्रिजरेशन का भी प्रोसेस होता है, वो स्किप नहीं कर सकते हैं. तो टियर की चीज हम नॉर्मली इतना टाइम लेते हैं, बट अगेन इफ यू वांट लाइक अ कस्टमाइज केक, उनको भी फाइनल डेकोर देते रहते 1-2 घंटा आराम से चला जाता है वैसा, बिकॉज इट नीड्स दैट मच ऑफ टाइम वैसा. ओके। एंड ये जो ये सब आप अकेले करते हो? अगर हम्म. आप एक होम बेकर हम्म. हो, यू डू इट ऑल ऑन योर ओन, और डू यू लाइक किसी चीज के लिए आपको हेल्प चाहिए तो प्रॉब्ली हायर करते हो किसी को या वॉट एवर? सी मेरी आदत ही वही है कि मुझे आई थिंक आई गेस ये होम बिजनेस में थोड़ा रहता है होम मेकर्स का, कि वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते उनको काम से रिलेटेड, बिकॉज दे वांट देयर वर्क टू बी इन अ सर्टेन मैनर वैसा. तो अगर वो थोड़ा भी 19-20 हुआ तो वो पूरा शो खराब हो जाता है. So I make sure that I'm the only one who's at least, you know, baking and like decorating and part, because मुझे हम्म। किसी और का प्योर जमता ही नहीं. ठीक है, for the delivery part and everything, हम्म। I think my dad goes with me everywhere because I have to handle the cake वैसा. So that's there, but I think otherwise there is no help. And to be very honest, I think no matter how many cakes are, even if I'm baking like 10-11 cakes a day, I know I can do it on my own. And more than that, I don't want anybody's help as of now. So That way. baking this 10-11 cakes on your own is because you is it because you have that passion that you want to do it, Hmm. or is it because कि हेल्प नहीं मिलती, या फिर उतना आपको लगता है कि स्किल्ड आर्टिस्ट मेरे जितना नहीं कर सकता? आई मीन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि See, to be very honest, बेकिंग इवेंचुअली पैशन रहता है, बट नो मैटर आप कोई भी चीज से लेके पैशनेट हो, देर आर डेज वाई यू गेट टायर्ड ऑफ इट. ओके, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब and it's your responsibility to deliver it on time. So no matter how tired you are or no matter there's no one around you to help you, you still have to do it. There's no like in bit choice or something like that. So आपको ही करना है. एंड आई थिंक ऐसा नहीं है कि लाइक जो सामने वाले आर्टिस्ट है वो इतने टैलेंटेड नहीं है ऐसा कुछ. नथिंग, मैं किसी को भी डाउन नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ आई एम नॉट यूज टू द फैक्ट that someone is probably out there doing my job, at least when it comes to my business. So I think no matter how long it takes, I make sure that I deliver it on time. I make sure that I make it on my own. That way. so I wanted to know from, have you ever done marathon baking? Yes, there has been time very recently in August during Independence Day. एक दिन पहले ही मुझे किसी ने 750 कपकेक्स का ऑर्डर जो है कंफर्म किया था, एंड उन्होंने कंफर्म किया था अराउंड इवनिंग में, और मैं तभी टाउन में भी नहीं थी. सो द मोमेंट आई केम बैक इट वाज अराउंड 8 o'clock. मैंने इमिजिएटली 8 o'clock बजे चालू किया था बेकिंग, एंड आई थॉट कि 8 से प्रॉब्ली 2 या 3 बजेगा, उतना तो नहीं होना चाहिए. एंड वो होते होते 6 बज गए थे सुबह के. तो आई थिंक फ्रॉम 8 to 6 a.m. was like a direct baking, एंड उसके बाद भी जो है काम खत्म नहीं हुआ था. I had to make sure that I have to pipe like ice the cupcake. वो 750 cupcakes को ice करना was again a big task बिकॉज वो because ट्राई कलर होगा शायद। exactly, हाँ, तो वो ट्राई कलर के साथ आया था वैसा. तो टू whip, to divide into 3 colors then pipe it, तो वो बहुत टास्क हो रहा था. और यही लाइक टास्क के बीच में ही
my dad was setting a few cupcakes in the fridge और उनके हाथ से वो बॉक्स छूट गया था. तो जो 60-70 cupcakes थे वो पूरे उल्टे हो गए थे at that moment. तो पूरा घर to be very honest already mess में ही था. ठीक है, बट वो सोच के ही आई गेस मुझे अभी भी काफी नाइटमेयर आता है बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि हमने वो कैसे वी वेंट थ्रू इट एंड things happen So the eventually better. delivery also you had to manage? Yeah, so the delivery and the worst part was the delivery was at two places, two different places, like Okay. north south types, Andheri and Vashi Seawoods. Oh. तो वो मैनेज करना and to make sure that you know at least एक delivery जल्दी चले जाए और दूसरा delivery maybe you know my sister was luckily there to help me out where she said you know I'll probably pipe the rest of the cupcake, you make sure at least half of it is done. So that eventually that project happened very nicely. I got a lot of appreciation from the owner and whoever ordered. But I think it's one of the experience that is vividly in my mind right now. So this is like a corporate kind of an Yes, order that you get. corporate, more of catering business. It was ordered from a catering business owner. That Okay. So they directly get in touch with you even though you are a yeah, homemaker, through yeah. mutual friends. I think they know he would have had my cake before, and that's how he know me. And he placed an order. So he was the whole process where he was bargaining and stuff like that first, which is why it took that long. But once the order was confirmed, I had to roll it immediately. So that was that. So continuing to this only, like we go to our next segment, baking ki dunya. So here I want to understand is how you told me that you don't have a cloud kitchen setup. Yeah, So as of now, you right now probably operate in your own ghar ka kitchen, right, and you bake like 750 cupcakes in your house. right. If I had to bake one cake at my place, then one meal gets skipped at home. Yeah. So I want to know, like, even you must be having a lot of festivals on all also, orders coming in that time. Indian festivals का मतलब खाना ही होता है. So obviously Right. I'm sure you can't tell your mom कि तुम बिरयानी मत बनाओ और मैं cupcake बना रही हूँ. How do you manage this? So now to in order to manage this, I have to make sure कि मैं उनके टाइम टेबल के हिसाब से चलूँ because they are eventually giving her kitchen to me. ठीक है, और उनके टाइम पे भी मैं बना नहीं सकती तो ए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा. B, they're cooking with masalas. Okay, so even if the tiniest of flavor goes into my cake or my icing, it's gonna ruin the whole thing for me. वैसा. So I have to make sure कि you know a night before, at least I'm done with the baking part. Okay, maybe with the decoration part, I have to get up early next morning and I have to make sure that you know मेरा icing तब तक हो जाए जब सब उठने से पहले I finish my work. So it's not a trouble for them or for me. Right. वैसा. But I think every baker has their own way of doing it. काफी लोग रात में baking और decoration करके ही रखते हैं. So I think it's easier for them. But I think everybody has their own ways. But I think most of them would really like to prefer night baking because तभी कोई नहीं रहता है. There is zero disturbance. So I think yeah. So you have kids also at your place. Yeah. Then So उनके साथ कभी mess होता है, मतलब I कभी think order बनाते बनाते all गिरा the दिया. time, all the time, all the time. But I think eventually वो खुद भी सीख गया है that you know he also says कि अच्छा नहीं order का है, I can't touch it, I can't touch it. So I think he has gone under that training process where he's not doing anything as of now. But of course एक दो incident हुए हैं जहाँ पे you know probably customized cake topper था और उसने वो topper तोड़ दिया था. So now what are we going to do? Like there's no, you cannot make a customized cake topper out of nowhere. So that was there. But eventually अब वो भी सीख रहा है, हम लोग भी you know I'm trying to give his own space because he's a kid after all. You can't keep screaming at him. So So what do you how do you manage this premixes? Do you use a lot of premixes or is it the natural way, traditional way of baking for you? see, I think premixes. We have been eating premixes since a very long time. Like the big brands used to. I don't want to name them, but we are all aware that what kind of brands they are. It's not that it's bad or anything, but I think the forte or the essential truth of any home baker is that they use a lot of good quality products, and that's how they get the clients back. Okay, so I think using the right kind of product, using the right kind of quality is what we're known for. And I think using premix would just degrade the whole point of it. So So you mean to say the taste differs a lot when it's a premix absolutely, cake absolutely. and it's a traditionally Yeah. made cake with all the fresh ingredients and See, everything. because premix only requires oil and water.
Okay, no matter how high quality the oil is, at the end of the day, it's oil. It's not going to give any sort of flavor or texture. On the other hand, when we use butter, good quality butter, you can actually see and feel the difference and probably taste it, of course. So I think that's where it is. And I think I like to use like curd in my eggless cakes. I think everybody has their own Ingredients, ingredient and recipe, but recipes. I think that makes a huge difference. Like curd and hot water mixed together, that's which is going to give a much softer cake. वैसा and then everything should be in a proper proportion. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दो और वो बन जाएगा. It's not like that. It doesn't work आप like ऐसे ऊपर देखते देखते डालते हो क्या अभी that. 8 साल बाद? नहीं नहीं. नहीं that's what I'm saying कि like baking is science और it's important for me to divide the ingredients ग्राम्स के हिसाब से 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हुआ तो आप एक्चुअली डिफरेंस देख सकते हैं बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स वो रिएक्शन से ही केक बनता है लाइक फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा जो एसिडिक है वो रिएक्ट करता है कर्ड के साथ जो दोनों एसिडिक है तो उससे आपको सॉफ्ट केक मिलता है वैसा लेवलिंग एजेंट वर्सेस द वेट इंग्रेडिएंट दैट So I wanted to know कि because I was very interested in baking, even I still am, but I don't get the time. Mostly सारे ingredients we used to get in Mumbai. Arif is very famous. But post many years say Swiggy and Blinkit has entered life, life has become slightly easier. Even when I want to do something small, it works. hmm. So how has it changed your life professionally? ओके सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको वो सारी चीज़ें ब्लिंकिट पे ज़्यादातर नहीं मिलती है जो आरएफ में मिलती है एंड नो डाउट आरएफ हैज़ क्रिएटेड सच अ किंगडम दैट और कोई भी शॉप प्रॉब्ली उतना वैरायटी नहीं दे पाए जितना वो देता है सो कंपेरेटिवली आई थिंक आरएफ इज माय फर्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली बट जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स है वेयर यू गेट अ वेरी सडन ऑर्डर and you don't it's not required for me to go all the way to RF and I think they're easily available on Blinkit and Zepto or any other platform that are recently started the 4 minutes 7 minutes delivery. It's quick and you don't have to hustle that much. Even though there is one more app where you can easily order, like the Uber app itself also provides a delivery option. Okay, like the Okay. pickup and drop option. So where you can easily, if you want something urgently, you can just send Arif the list. He'll easily keep it ready, and you don't have to go anywhere. The guy will pick it up for you, and he'll drop it at your place. So easy options available for people who want to Absolutely. do just weekend business of baking Yeah, passion yeah, करना yeah, है yeah. baking का business कर सकते हैं. Hmm. Right. So एक और बहुत important point था जो which I wanted to know from you is कि usually a lot of cousins of my cousins and my family friends and all have said कि cakes in the West are very sweet. Essentially, cake baking is has come from there only. I mean, Right. Absolutely. so why is it such? Because I have not. I was in the Middle East for like I was with my parents. I've had cakes all the time, every Hmm. year. Probably it's the bakery from where they used to get, or I don't know how it was. We never had that experience of tasting extremely sweet cakes or not having that taste. But I see a lot of my cousin friends who come from UK, US, come here and crave कि cake बना दो या खिला दो. So what is your take? Have you also experienced something like this, or people come and tell you, Hmm. or what do you understand professionally? Why is it like that? Okay, so there are two different aspects. My friend was recently shifted to state, also is facing the same problem. She keeps calling me and saying, ki, listen, you don't get the type of cakes that you get in India. The bigger reason is that their icing difference is pretty huge. They use buttercream, which is made out of sugar and butter. Okay, Okay, everybody has their own recipe, but this is the key ingredient. On the other hand, Indian cakes, if you see, generally are made out of whipped cream. okay, Okay, and whipped cream comparatively is much less sweeter than compared to the buttercream because it's literally made out of pure sugar. right, The second aspect is you don't get Indian infused flavors there. Okay, and we are so much used to our Indian mithais that even after eating a good chocolate cake, after a point, like even if you go to some party, you see that cake के साथ मीठा सर्व हो ही रहा है. So our definition of मीठा is not just related to cake. Okay. okay. So the infusion that we have created here
Like for example, the rasmalai cake, that's super trending. Everybody loves that flavor. The gulab jamun cake, and of course, we have gone vast to it where we have introduced pan cake and like God knows what all. But these are the type of cake that is obviously not available in the States. So even if you are not a fan of it, okay, you still crave for Indian dessert in cake. So I think that's also one of the reasons why there isn't like a similar touch outside compared to the Indian native. Yeah. Rasmalai and gulab jamun cakes are like a big market now. It is. I mean, eventually when it started, it's basically there's this cake named as tres leche. It's a milk-soaked cake, okay, that is very similar to rasmalai. People came up with this innovation that if we're using milk to soak our cake, why can't we use the rasmalai milk? Because eventually rasmalai is like a bomb favorite. Everybody loves it, as we all know. They decided to why not we can infuse that with the flavor of rasmalai, and that's how it eventually started. And now when you see a lot of people are genuine fan of rasmalai cake, it melts in your mouth, which is why it's probably one of the best. Best sellers. Yeah, Gulab absolutely. jamun and rasmalai cake. Yeah, mostly like more of rasmalai, but because it's like soaked in that milk and stuff like that. So yeah. So, if I have to compare, uh, what do you say, chocolate cakes, which are traditional chocolate cakes, Hmm. versus your rasmalai, gulab jamun, and all these flavored cakes. So, what works still? Any day chocolate. I mean, 80% of the people come up with this, that I'm okay with anything design, like, but I need a full chocolate cake. Okay. But of course, the domain of chocolate cake has not decreased. But clearly, people now prefer, why would they go for a vanilla cake when they can, get an enhanced version of a vanilla cake? So I think लोग फिर plain vanilla cake जाने से अच्छा है they normally go for this मलाई cake हो गया या red velvet which is also Come into picture yeah under very vanilla recently. only Very वैसा. recently. So So, what's your take on this whole thing happening with chocolates? I mean, how do you see that as a baker? The whole thing about cocoa being out of the market and then right. prices increasing. So this is very recently happened. Like काफी नई बात है ये जहाँ पे I'm not even sure कि every baker is yet aware of it. If you are, you know that the prices has doubled. Okay. So the reason is कि अफ्रीका जो cacao pod से चॉकलेट और पाउडर बनता है कोको पाउडर जो ओरिजिनल चॉकलेट रहती है वो इधर इट हैज गॉन स्टेल मतलब या तो वो खराब हो गई या तो मतलब उनका जो पूरा फील था वो खराब हो चुका है सो देयर इज अ लॉट ऑफ इट्स नॉट अवेलेबल इजीली और जो मार्केट में लाइक मिल रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी ओरिजिनल बिकॉज जो ओरिजिनल है अफ्रीका में वो काफी हद तक खत्म हो गए हैं अभी तो उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गया है Okay. considering that, which is why it is going to affect the prices of chocolate easily till 2 years from now. So maybe like till 25 or 26, 2026, you can see a significant change in the prices of chocolate. Because जो chocolate आपको normally 2,500 की मिला करती थी original chocolate, वो अभी बढ़ बढ़ के 5,500 हो गई Ex- है. exactly Exact double. double. Yeah. Because चॉकलेट अगर है ही नहीं बनाने के लिए तो बेचेंगे कैसे वैसा. So आप क्या अल्टरनेट यूज करते हैं फिर उसके अगर ऐसा कभी इफ दिस हैपेंस But then we don't have any other option. We have to use it, and the client has to understand that if you require this type of cake, you have to pay that much because that's how eventually it has increased. भाई बड़ा चढ़ाव हर इसमें आता रहता है. आप शक्कर का ले लो या आप मैदे का ले लो, कभी ना कभी प्राइस ऊपर नीचे बढ़ता रहता है. So as a baker, we have to set some sort of prices जो equal रहे for no matter what the condition is. But in such condition where चीजें extreme हो गई है, like literally double हो गया है. So यहाँ पे I think there's going to be like a mutual understanding between the consumer and the buyer कि you know listen this is what it is and अगर आपको चाहिए तो you have to pay that much. It's not in our hand. As simple so as that. then the prices of chocolate cake goes higher and then your prices of I mean people can still opt for your
rasmalai cakes or Right. gulab So jamun vanilla cake cakes. is, of course, vanilla cake, you don't require cocoa True. powder, chocolate, or anything. So that's going to be stable as it is. Okay. Unless, there is like a big fluctuated to cream prices, yes, ago. But I don't think so that is going to happen. But I think definitely like India में cacao pods का growing नहीं है. Like production नहीं होता है field में. तो ये ऐसी चीज है जो बाहर से import होके ही आती है. Okay. So it's not only India. Like the entire world, all over the world, are going to face this problem where Africa is the biggest supplier for the cacao pods, as we all know. But if you are, if there is a suffice in that, clearly the whole world is going to face it. It's as simple as that. How much do you think will affect your business or I think, as I said, that chocolate cake काफी bestseller है and people prefer chocolate cake. So I think it is going to eventually hit a lot. But I think the people who can eventually afford it will buy it if they're a fan they'll of it. still buy the premium price? Right. Yeah. So let's go on to our next segment, that is baking business. Sure. So in this only, first of all, I wanted to ask you. I see your stalls in many places. I also want to understand that as a home baker, how do you approach them? I mean, how is that you get to go so many places? And second thing, very very important question: how is that your stall gets over in 1 hour? I have seen that. Yeah. I've also seen, though, like you and your family going and bringing stuff again. So Right. you have like 3 repeats. Right. जबकि Right. अगर हमने हमारे स्टॉल आपके बाजू में लगाया तो हमारा तो शाम तक कुछ खत्म जाता ही नहीं है. Huh. तो ये क्या है सीक्रेट इंग्रेडिएंट? इवन योर केक्स ऑल्सो, ऑब्वियसली आई कॉल्ड यू बिकॉज आई नो द फीडबैक is essentially very good. So what's your secret ingredient? Though again recapping the fact that you are not a professional baker, I mean you Right. have not learned anything professionally. How does it work? सो अप्रोचिंग वाली बात पे नॉर्मली ऐसा होता है कि जब लोग नॉर्मली इवेंट रखते हैं या स्टॉल रखते हैं हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी ज़रूरत होती है ठीक है सो 50% ऑफ द टाइम इट्स दैट कि दे कॉल यू दे रन बिहाइंड यू एंड दे गिव यू द चार्जेस कि ऐसा ऐसा होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कीप एन आई ऑन देयर दिस ऐप बुक माई शो करके कि क्या अपकमिंग इवेंट आ रहे हैं Okay. ठीक है और ये कितना क्राउड कैचिंग है कितना उसका वो है क्राउड फॉल है तो वो सब चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है दूसरा चीज इज आई थिंक देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हियर एवरी बिजनेस नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ऑडियंस क्या है और कैसा है सो आई थिंक आई लाइक टू सेट अप माई स्टॉल समवेयर जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो ओके सो आई थिंक बेकरी और केक और मीठा कपकेक ये सब देख के बच्चे इवेंचुअली जिद करते ही है ठीक है इवन इफ यू आर नॉट लाइक selling it at probably at the cheapest rate or the highest rate, they will still catch the or hold the finger of the parents and say कि नहीं मम्मा मुझे खाना है. So your target segment is Is kids. kids. So anywhere, so it's not that I haven't tried anywhere else. मैंने कॉलेज में लगाने का ट्राई किया था अपने ही कॉलेज में एंड वो इतना नहीं वर्कआउट होता है जितना ये सब इवेंट में होता है जहाँ बच्चे होते हैं तो आई थिंक द इंग्रेडिएंट और द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और कैसा है वैसे अगर आपका हाई फाई प्रोडक्ट है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा या आप थोड़ा साउथ साइड या बैंड्रा साइड लगाओगे तो आपको पता है कि लोग इजीली आ जाएंगे ऑन दी अदर हैंड फॉर माई और एनी अदर बेकरी बिजनेस आई थिंक इट्स ईजियर अगर आप कोई फन फेयर में लगाते हो जहाँ बच्चे देख के अट्रैक्ट होंगे ही इफ यू पुट अप नो वैसे डेकोरेशन जहाँ बच्चे इजीली अट्रैक्ट होते हैं एंड इफ यू कीप अ फेयर प्राइस पेरेंट्स ऑल्सो डोंट माइंड बाइंग इट सो आई थिंक दैट्स absolutely there and that's I think the main reason why it gets sold out so far and of course the taste I mean That's there. So what kind of competition do you face in terms of in terms of home baking? so I think इट फॉल्स अंडर डिफरेंट सेक्टर आई मीन सबसे पहले तो अगर आप वो ई कॉमर्स की वेबसाइट के अगर आप बारे में बात कर रहे हो कि जैसे आई एम ओनली अवेलेबल ऑन स्विगी मिनी Okay. ठीक है स्विगी मिनी इज अ न्यू थिंग लॉन्च्ड बाय स्विगी ठीक है जहाँ पे आपको अपना परसेंटेज या कट नहीं देना होता है उनको इट्स फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस सो अगेन इफ यू नॉट अवेयर ऑफ इट दिस इज द ऐप दैट यू कैन यूज बट अगेन ये सबके फोन में नहीं है लाइक एज वी ऑल नो स्विगी सबको पता है स्विगी मिनी आई एम नॉट इवन श्योर कि कितने लोग इसके बारे में Wait. जानते भी हैं
So I think there are two things which like Swiggy and Zomato can probably change is where for home bakers they don't have a cloud kitchen nor they have like a gigantic fridge जहाँ वो अपना केक का सामान स्टोर करके रखे. Right. So for example अगर कोई ऑन द स्पॉट डिलीवरी आता है तो वो वैसा नहीं कर सकते हैं कि वो आधे घंटे में केक दे देंगे, वैसा पॉसिबल ही नहीं है होम बेकर के लिए. So I think if at all this message goes out that way, I think Swiggy Zomato should also इंक्लूड सच अमेजिंग ऑफर्स और अमेजिंग टाइम लिमिट का ऑप्शन जहाँ पे अगर आप एक दिन पहले ऑर्डर देते हो तो ए आपको बहुत फ्रेश केक मिलता है. यू हैव नो आइडिया व्हाट द बेकरी इज सेंडिंग यू एंड हाउ ओल्ड इट इज. ठीक है. बी यू विल गेट अ कस्टमाइज्ड डिजाइन. ठीक है. जो इजीली अवेलेबल स्विगी और जोमेटो पे नहीं है. अगर आपको बेसिक केक चाहिए तो आप स्विगी जोमेटो पे जाते हो. अगर आपको कस्टमाइज्ड केक चाहिए तो काफी हद तक लोग होम बेकर के पास आते हैं. तो आई थिंक इट बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एज अ होम बेकर टू शोकेस देयर बिजनेस. एंड ऑफ कोर्स स्विगी जोमेटो को भी इनसे फायदा होगा बिकॉज मोर द मेरियर है. जितने बेकर्स आएंगे जितना काट मिलेगा उनका फायदा होने वाला वैसा. So मिनी पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? मिनी पे आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स जस्ट देयर. मतलब आप अपना प्रोफाइल रेगुलरली अपडेट करो तो प्रोबेबली वो आई कैचिंग होगा. अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि इतने लोगों को पता ही नहीं है देयर इज दिस ऐप नोन एज स्विगी मिनी फॉर होम बिजनेसेस और स्मॉल बिजनेसेस जो घर से चलाते हैं या जिनका ज्यादा बड़ा नहीं है और जिनको नहीं इंटरेस्टेड है उनका एक कट देने लाइक एक परसेंटेज होता है. So, but again, it's not very great, or to be very honest, it's not, it's barely working, if I'll be, saying the truth. So you, if you had to compare Instagram versus I think any day Instagram, anytime. any day. Because Instagram पे आप regular जैसे मैंने बोला, even if you post regularly, people know that you exist. People know because Instagram एक बहुत बड़ा addiction है, काफी लोग उस पर addicted है. And I think आप बस एक चीज टाइप कर दो hashtag, वो आपको 10 ऑप्शन दे देता है. So you are on a bigger app, you are on a bigger market. So I think that's why you easily are, available that way. What kind of certifications you have, or have you have to use? Do you have to use any certification for Swiggy So, Mini? as far as I know, the food industry requires the FSSAI. Okay, Okay. that's a food certification जो जरूरी है. अगर आपका क्लाउड किचन है तो 100% जरूरी है विथ GST. बट आई थिंक अदर देन दैट अगर आप होम बेकर भी हो तो बहुत सारे बड़ी कंपनीज जब आपके पास कॉर्पोरेट ऑर्डर लेकर आते हैं, दिस इज दैट वन थिंग जो हर कोई पूछता नहीं है. बट इफ यू आर अप्रूव्ड दे नो दैट यू आर प्रोफेशनल और आपने अभी अभी चालू नहीं किया ना. वो मिलना बहुत ज़्यादा ईजी है. तो आई वुड रेकमेंड कि आप कोई एजेंट के थ्रू ना जाएं बिकॉज दे चार्ज प्रॉब्ली ट्रिपल एंड मोर देन दैट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ये बहुत सिंपल फी है. आप सिर्फ गूगल पे जाइए FSSAI.in टाइप कीजिए, वो आपको इजीली 10 ऑप्शन दे देगा. उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है आप अपनी डिटेल्स भरिए. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर. जैसे अगर आपका स्टॉल है तो उनका अलग FSSAI है. अगर आपका होम बिजनेस है या होम बेकरी वैसा कुछ अलग अलग है. तो आपको जो भी सूटेबल लगता है यू डू इट. आई थिंक ईयरली उसका 100 रुपीज है. 100 rupees. 100 रुपीज है Okay. वैसा और आपको इमिजिएटली सर्टिफिकेट मिल जाता है. सो दैट वे यू कैन पोस्ट इट एवरीवेयर कि आप अपने बायो में लिख सकते हो कि देखो आई एम नॉट ओनली अ होम बेकर बट आई एम ऑल्सो FSSAI अप्रूव्ड. ये Right. लीगली मेरा बिजनेस जो है वो फूड प्लेटफॉर्म पे अप्रूव्ड हो चुका है. Right. दैट वे. So I think this is very helpful and probably this should help like a lot of people. Anytime have you faced anything like this where baker versus home baker आपके orders छीनने की कोशिश or whatever, ऐसा Mm, कुछ आप even in your, I mean your maybe your world is slightly smaller at this point of time, but right. do you face competition? See, I won't judge the client or the consumer जो हमसे प्रोडक्ट लेने आया है बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो आप 10 जगह पूछते हो. ठीक है. तो वो मार्केट में कंपटीशन होना आई फील एक अच्छी बात है बिकॉज ए आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. ठीक है. आप बूस्ट अप होते हो उनको देख के क्यों ना अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो मतलब हम भी कर सकते हैं. सो आई थिंक आई हैव नेवर टेकन दिस इन अ नेगेटिव फीडबैक बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट रिक्वायर्ड. और आई थिंक कंज्यूमर का हक है कि वो 10 जगह पूछ के ही एक फाइनल करे बिकॉज आई थिंक दैट्स द इंडियन मेंटालिटी एंड वी आर ऑल इनटू इट. So it should not affect and it never did unless until if they're trying to play dirty games or anything like that. But I try to Stay maintain my away from. distance. Yeah.
So, new clients versus old clients. Hmm. Uh, what do you like? What do you think? What is your more? How do you is retention power किस चीज की ज्यादा है? Even after 8 years. सो पहले तो बेसिक केक्स मतलब इजीली मिल जाते हैं, फ्रेश होते हैं। सो रिसेंटली पहले मुझे बहुत टाइम लगता था बेसिक केक्स बनाने में, बट अगर अगर आप दोपहर में दे रहे हो आज, तो आपको मैं शाम तक दे सकती हूँ वैसा। तो एक वो हो जाता है। दूसरा जो मेजर रीज़न है, एक बेंटो केक करके आया है प्लेटफ़ॉर्म पे, जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, 2 लोगों के लिए होता है और जिसको छोटा-मोटा इवेंट सेलिब्रेट करना है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी होता है। इट कॉस्ट यू अराउंड 300 और 350 बक्स, ठीक है? सो व्हाई टू स्पेंड सो मच ऑन कस्टमाइज्ड केक व्हेन यू कैन एक्चुअली गेट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट एट सच अ चीपर रेट। वो So एक है। bento cakes are more a smaller version of a या customized लाइक cake. अ मिनी केक दैट कैन गेट कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। Okay. वैसा तो लोग वो प्रेफर करते हैं लेना, बिकॉज आजकल बहुत सारे इवेंट, जैसे मैंने बोला कि लोग हर चीज मनाने लग गए हैं, और Right. जिसको ज्यादा केक पसंद भी नहीं है वो फिर भी ले रहा है। तो वो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकर आते हैं कि ऐसे छोटा वाला अवेलेबल रहेगा क्या, हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम ही नहीं जाना है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे बेंटो केक वी कैन कीप इट। एंड दूसरा चीज इज ऑफ कोर्स द कस्टमाइज केक, आई मीन वो उसके लिए तो आना ही है। There's a different, या completely different. And have you ever thought of having your own master class or training new homemakers since now you have been 8 9 years in राइट this? राइट। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है इसके बारे में, ड्यूरिंग कोविड, प्रायर टू कोविड, पोस्ट कोविड, वेरी रिसेंटली, दैट आप सिखाते हो क्या या आप सिखा सकते हो क्या, बिकॉज आपको पता है कि टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है वैसा। आपने कभी लाइक कोई प्रोफेशनल वे में सीखा नहीं है, तो आप अपने घरेलू टिप्स वो बता सकते हो जो शायद रिलेटेबल हो ज़्यादा। Right. बट अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ें घर पे करना विद घर का माहौल is very difficult. So it's not that I don't want to do it. Sure, that's the future task that I have planned. It's in my bucket list. But then eventually, when you end up buying a cloud kitchen, when you have your own space, when you have your own, that okay, okay, now I have my own space and I can make people things, or like, make these things where people can understand that okay, this is how it works. So I think eventually it's a next step. But as of now, I don't. I would love to, but again, these are like the So future steps. what's the next, what's the future, what's the next 5 years? What do you see yourself as? Are you planning to go into Master Chef, or are you planning to do something like are we going to see, are you going to enhance yourself? Yeah. So MasterChef is for sure on the bucket list, but I'm not sure how certain I am for that. But I think for sure I am planning to take a step towards the iCloud kitchen and the cloud kitchen, and where I think I can easily be available on e-commerce website, जहाँ पे automatically sales बढ़ जाएगा, and I'll see if that cloud kitchen works well. I can probably go ahead and think about opening a shop, and then eventually the franchisee thing where एक जगह खुल गया तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते। But for sure, I want to invest myself in this business only, and there's no other way I'm going anywhere else. So what's your advice for the new entrants or the people who want to just get into home baking Hmm. and then make a career into it? Is there a career as such? Do you think uh, can that happen? And See, I think market बहुत ज़्यादा बड़ा है और सबके लिए जगह है. Why am I saying this? Because 5 years ago, like prior to COVID, इतना bakers का demand नहीं था. Or I think post COVID, like or during COVID, everybody started baking. Okay. right. So there was this Oreo cake जो बहुत trend हो गया था. तो I think वो हर घर ने कम से कम एक बार बनाया है. At the moment everybody thought कि अच्छा ये बन सकता है तो हम तो बेकरी खोल ही सकते हैं। तो इवेंचुअली काफी लोगों ने उसे बंद कर दिया है पोस्ट कोविड, बट अभी भी काफी लोग हैं जो एज अ साइड बिजनेस इसको देखते हैं, एंड दे आर, एंड दिस इज आई एम प्रीटी श्योर आउट ऑफ पैशन ओनली। बट आई थिंक जितना डिमांड है अभी कंज्यूमर्स में, उनको हर चीज के लिए केक चाहिए, तो आई थिंक नहीं आना ये फील्ड में वुड बी अ बिग मिस्टेक, बिकॉज जितना सप्लायर्स है उतना ही डिमांड में Demand. लोग भी है वैसा। तो एंड आई थिंक इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड if you're passionate, hard work, or maybe a hint of luck can take you to places. That's it. So this session is so let's wrap up this session, and Sure. after that I'm going to probably order cakes from her only in the evening.
And so, lastly, I want to know from you is what's your inspiration? I mean, Hmm. I really want to know how has it worked, and Hmm. whom do you want to tribute your success? Hmm. Because home being a baker, or working from home, or being a micro entrepreneur at home Right. is not an easy job. Saying Absolutely. again, you have to maintain the routine of your Hmm. family. You have to maintain, you're you're working in the kitchen, that is like the main area, plus with Right. your mother and probably your sister-in-law, or maybe your bhabhi. So it's the most difficult task. Right. So whom do you want to, give a tribute to, or Hmm. what you want to say about your journey? Right. So I think like baking business or any other business comes with a lot of responsibility. Not only as a small entrepreneur you understand कि आपको सिर्फ किचन का एरिया नहीं चलाना है, आपको मार्केटिंग भी करनी है, ठीक है, आपको बाकी भागम दौड़ी भी करनी है, हाँ, आपको मेक श्योर करना है कि at times you have to buy also because you have to wash all the clothes, Vessels, yeah, yeah. and require things. But I think my dad has always been there. I'm not sure if a lot of people can say this because I think being a girl, not a lot of parents support running their own business, and not a lot of parents support where a child is, living their dream or want to go behind the passion. So I think that why I'm very privileged and passion, it's just that my dad is always there. You see every event everywhere. I think he's promoting Yes, my we business, have seen that. right? My So business more than I am. He's going to places. He's just there. We'll probably see it. So I think he's probably what 60 plus, but he has never felt, or never make me felt that, you don't make me do this, I'm tired or stuff like that. You wake him up at 3 a.m. He's like, ठीक है कहाँ जाना है चलते हैं. You need a help, chocolate wrap करना है, ठीक है करते हैं. So I think I would call him the backbone of hotcakes if that's what it is. And I think it's super lucky to have a single parent or both parents actually who invest uh, that much of time and effort in your business and they're not getting anything from it. It's not that they're getting a lot of money out of it or anything like that. It's just that they're doing out of pure love, which I think is great, and I think I really look forward to it. Yeah, so just out of curiosity, you might just get married in a few years. hopefully. So how do you plan to do this later on? Are you going to keep this as like a uh, मैं यही करूंगी और करना ही पड़ेगा, See, no matter or where would I you take it am, in a professional manner? I mean, yeah, no matter 8 where I hours am. baking and then coming back See, home. I have honestly no idea how future holds, but I just feel no matter where I am, I don't want to shut something that I started out of love and passion. So I think मैं जहाँ पे भी होंगी, even if it's not in India or even if it is in India, I think I would really want to and like to continue it. And I hope that, So the hotcakes will exist. that's hopefully. Yeah, Okay. that's the goal. So on that, we wrap this session, which was really a very yummy session for all the home bakers and for all those people who have this passion of baking, including me, who has not been able to follow the passion. However, I have drifted my uh, career in different paths, and I don't think so I have time till I am 50 to follow my passion. Probably. But those who are early in their age and want to do this, I think Right. she should be your inspiration, and Yeah. you can go and maybe you can talk to her on DMs on Instagram if she's open to it, Sure, absolutely. and maybe she can inspire you, give you some tips, and you can Yeah. order some cake in return, Yeah, and that's then start your that's the cloud motive. kitchen and comment on YouTube and tell us that we started our cloud kitchen because of Right. baking business, because of your podcast. So Hamza, thanks for coming, and thanks for being such a lovely guest and Most giving welcome. such insightful information. And I can just smell chocolate and vanilla essence, and I don't know, I just need cake right now. So audience, if you really like this episode, please like, share, comment, and subscribe, and stay tuned for a lot of more new topics and new insights that will be coming in our next episode. Bye.